₹50,000 की रेंज में बढ़िया सा फोन चले। Hello. Hello. Just a minute. Okay, all good. Hello. Okay, all good. Hello. Yeah. Okay, all good. Hello. Right. So hi everyone, welcome back to YouTube channel Classes with me. Let's start with this thing. Just a minute. Okay, done. Okay, so hi everyone, welcome back to YouTube channel Classes with me. So today we will talk about like the data cleaning assignment plus doubts clearing, right? We will do our data cleaning assignment and then we will go with the doubts clearing, right? Let me just minute. So anybody have any doubts, you can ask it right now. And when I start my work, I mean work in the sense the assignment, then also you can ask your doubts, so no worries for that, right? And what doubts can you ask? You can ask your doubts from SQL, from Python, from Power BI. You can ask your doubts from there, right? So let's start with today's topic. Just a minute. So let's start with today's topic and also today's assignment. And I hope everything is visible here. Yeah, okay, good. Let's start with the work. Yeah, we were actually working on this assignment number 10, right? So let's see what it is all about, this assignment number 10 and all. Okay, so the assignment number 10 is
about data cleaning. ठीक है, let's start with that. So in data cleaning, I think we were doing our work in email cleaning, right? Let's continue with that. ठीक है, let's select this thing. Let's go to our SQL environment and let's start with the work. ठीक है, let's go on with that. Okay, done. Let's copy paste it and let's write select everything from raw customers. ठीक है, let's write this and let's see what data do we have here right now in front of us. तो what डेटा वी हैव. ओके, हमारे पास कुछ कुछ कॉलम्स है. वी हैव सम कॉलम्स लाइक कस्टमर आईडी, फिर फुल नेम, डेट, सैलरी, ईमेल, रॉ. तो अभी जो क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे, हम लोग जो ईमेल आईडीज़ है उसको हमें क्लीन करना था, राइट. अब यहाँ पे जो ईमेल आईडीज़ है वो आप देखो. अब जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ईमेल आईडी, वो आप देखना. ठीक है, यू विल गेट टू नो अबाउट कि मैं क्यों क्लीनिंग का बात कर रहा हूँ ईमेल आईडी में. लेट मी शो यू दिस. या अब देखो यहाँ पे किस तरीके से डेटा है. अगर आप देखोगे प्रॉपरली, पहला वाले में अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ क्या है, एक स्पेस है, राइट, सिंपल. यहाँ जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी एक स्पेस अवेलेबल है. सेम थिंग यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है, राइट. अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, @. ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि जब आप कोई मेल आईडी लिखते हो और व्हेन यू राइट एनी मेल आईडी, वहाँ पे 2 लिखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, टू बी ऑनेस्ट. अब यहाँ पे भी आप देखो 2 एंड दैट 2 इट इज़ एट अ डिफरेंट प्लेस. आई मीन पहले जो @ था वो क्या था, एक जगह पे था, राइट. ये सब टाइप का अपने वो इशू क्रिएट होता है, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, अब ये सब चीज़ को कैसे क्लियर आउट करेंगे, इसके ऑप्शंस है बहुत सारे. फर्स्ट ऑप्शन इज regex एक्सप्रेशन, राइट, और दैट इज़ ओनली द बेस्ट ऑप्शन, टू बी ऑनेस्ट, टू क्लीन इट आउट, सिंपल, राइट. अब देखो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. तो यहाँ तक आपको समझ में आया लाइक किस तरीके से इश्यूज़ हैं यहाँ पे जो लाइक इशू क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में, राइट. तो ये सारे इश्यूज़ को हमें क्लियर आउट करना है, करेक्ट. जस्ट अ मिनट, लेट मी सी. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, जितने भी डेटा है अपने पास सबको पहले लोअर केस में करना है एंड ट्रिम करना है. ठीक है, फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस फॉर्मेट में डेटा को रखेंगे. सेकेंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रिम करने वाले हैं डेटा को, ट्रिम द डेटा एंड लोअर केस फॉर्मेट द डेटा. ठीक है, सिंपल एज इट इज़. दो चीज़ें हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू डू इट. ठीक, लोअर केस फॉर्मेट एंड ट्रिम. अब देखो, जब लोअर केस फॉर्मेट, अब इस सिनेरियो में जो ईमेल्स हैं अपने पास, जो ईमेल्स हैं अपने पास, ये सब में लोअर केस फॉर्मेट है, राइट. ये सब में क्या है, लोअर केस
फॉर्मेट है, राइट. बट द थिंग इज इन रियल लाइफ सिनेरियो, क्या होता है, वो लाइक उस फॉर्मेट में नहीं रहता है, कभी कभार इस तरीके से रहता है. ठीक है, इस एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से रहता है. ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि देखो जो डेटाबेस रहता है ना, सीक्वल डेटाबेस, उस पर क्या होता है, जो भी डेटा हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं. जैसे एक्सेल सोर्सेस, सैप से आता है, कभी कभार टैली से आता है, लाइक दैट. ठीक है, सिंपल. तो इंपोर्ट करने टाइम इश्यूज क्रिएट होते हैं. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं. तो वही सारे इश्यूज को हमें क्लियर आउट करना है. ठीक, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, पहला चीज़ क्या है, वी हैव टू डू द ट्रिम वाला पार्ट. ठीक है, ट्रिम वाला पार्ट अपने को करना है. ट्रिम क्या करना है, ट्रिम एंड लोअर, राइट. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, उससे पहले मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट ईमेल रॉ. ठीक है, मेरे को ईमेल रॉ चाहिए, जो भी आई मीन जो कॉलम है, टू बी ऑनेस्ट. फिर मेरे को लिखना है ट्रिम लोअर ईमेल रॉ एज ईमेल. ठीक है, फ्रॉम क्या रहेगा, फ्रॉम अपना डेटा सेट रॉ कस्टमर्स, राइट. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को ना पूरे जो भी डेटाज हैं उन सब में से सारे कॉलम्स नहीं चाहिए. वी ओनली नीड दोज कॉलम्स जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर आता है. ठीक है, हमें सिर्फ वही कॉलम चाहिए जो हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, दैट्स इट, राइट. और हमारे रिक्वायरमेंट में क्या है, 2 ही कॉलम का नीड है, टू बी ऑनेस्ट. फर्स्ट थिंग इज दिस, अपना जो ईमेल कॉलम है. सेकेंड थिंग इज उसका क्लीन वाला वर्जन. ठीक है, सारा चीज़ रखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड ऑल दो स्टफ्स, राइट. तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा. यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. सो किसी को कुछ डाउट हो यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो. वी कैन क्लियर द डाउट, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, मतलब टिल हियर यू कैन आस्क. आफ्टर दैट once the doubts are clear we will move to the next part. ठीक है, that's the thing. Just let me, where's my water bottle? Okay, just give me a minute, let me bring my water. Hi Prashant, welcome to live stream. Hi Prashant, welcome to live stream and good evening. So I hope यहाँ तक like each and everything is clear out till here of the data work that we have done, right. Now let's move to the next part of it. After trimming and like doing the lowercase kind of stuffs in the email,
let's do one thing. Let's move to the next part where we have to clear out all those spaces which are in the middle. ठीक है, first thing. Second thing is this double at the rate and all those stuffs. If I say like in what format mail IDs are written, ठीक है, if I ask that, so what will be your observation in that? Let us write. ठीक है, let us take an example first of this. Oops, sorry. Let us take this example and let's work with that. There is a mail ID. ठीक है, let's remove the space here for some time. ठीक है, what is the, I mean to say, format or the structure of a proper mail? ठीक है, first thing here, I mean to say in the full set, in this it will be mixture of alphabets, it will be mixture of numbers, ठीक है, it will be mixture of plus minus slash at the rate, ठीक है, then same thing will be given here, ठीक, so it will be mixture of all those things, ठीक है, mixture of all the stuffs, or you can say all the work that we have written here, ठीक है. After that what will be there? This is the first part, ठीक. After that what will be there? It will be like at the rate gmail.com example or let's write like this, it will be better, at the rate email.com and at the rate email.co.in, ठीक है, it is like that, at the rate email.co.in example I am saying, right? So here what will be there? At the rate will be there, simple. One at the rate will be there, simple. After that domain name will be there, right? And what things we have in domain name? Suppose a company, if you like when I was in Bangalore, there I've seen there was a company named 24/7 AI करके, ठीक है. So example this is, it is also having the same thing like A to Z 0 to 9, right, like this. Somewhere plus minus will be there, slash will be there, star, all those stuffs will be there, ठीक है, because domain name is what, it kind of company name, or better to say organization name, ठीक है, or better to say organization name, ठीक है, it's like that, ठीक. So domain work is done, I mean to say at the rate email part is done. After that what kind of scenario we have? We have either .co, either .in, either like there are like .co.en, like this kind of scenario you might have seen. Like I might be wrong here, somewhere it is like .co.sp for Spain, like this. If you go for other websites you might have seen, for India it is .co.in, for other countries, for worldwide it's .com, for some countries like suppose for Dubai it is like sorry DB, like that. Some of the websites, it's not like for all. For Spain like this, for EU region it's like that, ठीक है, like this kind of scenario. So here what observation we have? Let's not talk about .com because it is like simple. .co.in, it is all about like this two will be having at least two data, I mean two what we said, in that we will be having at least two data, right, in this, take, at least two data will be there. After that if it would be like that, good to go.
ठीक, but here at least 2 data will be there. This is our observation. ठीक है. So right now for the regex expression, we have to just add up some uh, data and details which will be at least similar to the actual मेल आईडी. ठीक है, सिमिलर टू द एक्चुअल मेल आईडी. मेल आईडी मतलब मेल आईडी स्ट्रक्चर. ठीक है, मेल आईडी स्ट्रक्चर मतलब मेल आईडी के स्ट्रक्चर में होना चाहिए, राइट, नॉट द एक्चुअल मेल आईडी. ठीक है, इट्स लाइक दैट. एंड यहीं पर ही रेगेक्स comes into picture and help us in clearing the data and polishing the data and giving out the proper data in the data set. ठीक, so what things we have to write? First thing first, we have to use this thing because we will have to, like, we have to use the trim and lower part in the mail, then only we will be continuing with the regex part, right? Regex part, it is okay, like we can use uppercase, lowercase things, right? But if we keep the data in one proper format, like we want to keep the data in lowercase, in this way what will happen, at least we will be able to have a clear picture, like we have done this part, we are done with the part 1, we are doing with the part 2, like that. Or otherwise what will happen if all the data, suppose in the mail it is like collection of what we say lowercase, uppercase, like that. ठीक है, what will happen, there will be an issue in future, it will be an issue. ठीक है, that's what I'm saying. So let's start with the second part of the work for data cleaning in the mail. ठीक है, let's go with that. Where is it? Yeah, sorry for this. ठीक है, this is the thing. Now let's go with the work, right? What we will do, we will say कि if the mail are not in a proper format. ठीक है, what proper format? The format that we have seen right now. What proper format? The format that we have actually seen right now. If the mail id is not in proper format, what you do, in that place just give a variable or give a placeholder from a user side. ठीक, simple as it is. For that what we need regex p replace. Simple. ठीक है. Oh my god. Oh. We need regex p replace. ठीक है. After this regex p replace, what we need to do, we have kept the proper thing, that is trim, lower, mail, I mean email string. ठीक, just give a comma here, ठीक है. After that we will say regex p replace. हाँ, if there is a space in between this, where is it, there is a space in between this, clear out the space and keep it a global way, and let's execute it. Let's see what I am trying to say. Why I am doing this? I am doing this so that the spaces in the middle will get removed. ठीक है, the spaces in the middle will get removed, that's it. Because in trim what happens, only the starting and the ending space get removed, but using regex p replace, the spaces in the between also get removed. ठीक है, that's the thing. So we will say कि suppose, just let me write the proper one, case when this is equal to, मतलब this is the proper format, equal to
where is it, caret, this. Whenever I use a caret outside the box bracket, the thing is ki we are saying it should not be like that. I mean to say, let me write it here. If you use this thing, if you use this thing outside the square bracket, it means not similar to, or you can say not equal to. ठीक है, just a minute, let me just erase this and this. But if you use like this, if the caret is inside the square bracket, that means it is equal to. ठीक है, that's the thing, right? That's the thing, simple as it is. ठीक, that's the thing. So the main logic stands here, right? After that, like till here we have already completed the 50% of the work. The remaining 50% we have to just write the structure, and that is easy. It looks tough, but let me tell you, that's the easiest part. ठीक है, first of all we have to give the structure. In what way? In the way where we have to give the structure in a way where we will be describing to SQL like before at the rate, this thing should be there. This thing matlab A to Z 0 to 9 dot underscore plus minus all those things. ठीक है, that's the thing. I hope you are getting it. So till here, if you have any doubt, you can ask. Till here, if you have any doubt, you can ask. ठीक है, because I know this regex things are bit kind of bit complicated. That's why I'm saying. If you have any doubt here, till here you can ask. ठीक, related to caret, related to box bracket, I mean square bracket, related to similar to, not equal to, what it is all about, just you can ask, right? Right, like any doubt till here? Okay, let's start with this. Let me, yeah, the thing is, what we are saying, the first part of the domain should always, if you write mail id, should always start with a letter or a number. ठीक है, so it would be like A to Z or 0 to 9. ठीक है, we are saying this. ठीक, it should always start with this. It should not start with, if it should not start with at the rate, it should not start with this, it should not start with hash. It should always start with either A to Z or 0 to 9. ठीक है, after that we will say A to Z 0 to 9, then we will say dot underscore, it can be percentage, it can be plus, it can be minus, it can be anything. ठीक है, that's the thing, right? Oh my god. ठीक है, this is the first part of it. This is the first part. After that, this is the first part of the mail structure, I mean to say. After that we will be using what? We will be using at the rate
and domain name, then .com, .co, .in kind of work. So let's go in that. Till here it's okay. Then we will say at the rate, because see, mail id should have at the rate, no worries for that. Mail id always should have at the rate. Okay, right? I hope you are getting the, I mean to say, getting the idea of clearing the data set from here. If you are having any issue, just ask your doubts. Okay, because I know it is bit complicated, that's why I'm saying, right? We will be going step by step. Like we have seen the first part of the mail. Okay, first part of the mail should be having all those letters and all, we have cleared it out. Right now we are moving to at the rate. Okay, at the rate वाला part. ठीक, ठीक है. Right now if you see what I have used star and at the rate. ठीक है, star, after that at the rate. So I thought you people will ask question related to this, why I have added star, why, like there is no star kind of thing in the mail id structure. In regex, let me tell you, when you use star, star gives us the freedom of using any length of username. If I don't use star, what will happen? You know what will happen? Only one letter would be there, like suppose a at the rate gmail.com, or it can be right b at the rate gmail.com. If I write a b at the rate gmail.com, it will show as an error. That's why I'm saying. So when you use star, so star is like they will allow any length ka username. That's why. That's what it is all about. Okay? So that's the reason we are using star here, to say ki any length of the character, if it is present before at the rate, just go with the flow. That's it. Then after at the rate, what we will write? We will write the domain name. Okay? So what data should be there in the domain name? Like we have seen, oh sorry, from the starting, it, like I've told you, when I was in Bangalore, I have seen there was a company name called 24/7 AI करके. ठीक है? So what it is like? It is like having collection of or mixture of alphabet and numbers. So same thing we will be adding here. ठीक है? We will be adding a to z 0 to 9, same like this, a to z 0 to 9, because it is like we are saying to SQL, after at the rate anything can start the domain name. Like I've told 24/7 AI, so first letter can be 0 to 9, or like at the rate gmail.com, first letter can be any alphabet. That's what we are saying. We are saying the first letter should contain either alphabet, either 0 to 9. ठीक है, it should not contain like slash plus minus like that. It will give an error in the email id. ठीक है, it should be either an alphabet, either number. ठीक है, that's the thing. After that we will say it can be a to z 0 to 9, and then we will say dot can be there, dash can be there, underscore can be there, it can be anything. ठीक, this is domain part. Right now we will go with the dot wala part, like .com, .co, .in like that. So for dot in regex we have to give slash and dot. ठीक है, so when we see the domain wala part, it is what? .com, .co, .in. So it is only having alphabets there, so a to z. ठीक, a to z will be there. But what if I say you कि the a to z wala part, like .com, .co, .in, if you see it properly, what you say? You can say कि हाँ, the letters contain at least the domain name contain at least two letters, like .com, .co, .in,
that is at least 2 letters. So at least 2 letters should be there. It should not be, not it should not be like that dot c, dot I, dot z. No, it should be dot co, dot in, dot eu, dot in, like that. So it is like at least 2 letters would be there. ठीक. So at least 2 letter and continuation, and after that dollar sign is like closing the string here. ठीक है. What I am saying, if you have a look here, I am saying that case when regex p replace trim lower. ठीक है. regex p replace trim lower, ठीक, is equal to this. ठीक. If it is equal to this but there is a caret sign in the front, ठीक, then do one thing. Where is it? Then do one thing. Let me write then here. Then give me this. ठीक है. Now let me show you what I am trying to say. Let me give the what happened. This अच्छा end will be there. End. Sorry for that. हाँ. What happened? Wait, I think we have. Okay. Sorry. It should be like that. It should be case when trim lower regex p replace, then it should start with like this. ठीक है. trim lower regex p replace, ठीक, then it should be trim lower regex p replace, right? It should be like that. Huh. Right now let me do it. What happened here? Then let me see. This is this, and this is okay. Okay, we don't have a detail for this. No worries. Email raw. Okay, we have done the mistake here. Right now let's see it will work. No function matches the given trim lower regex p replace email raw. Okay, we have to copy this as well. Control C, Control V. Right now it's okay. ठीक. Right now we are getting, but here it is showing us null. Let's see what's the issue here then. Let's see what's the issue here. Oh, sorry for that. Here also star will be there. Right now it's okay. ठीक है. Right now it's okay. Right now if you see what we have done is like, wait a minute, as email, just let me be more clarified here. Lower regex p replace and this. Okay. Right now see, right now what I have told, if the mail ID that we are seeing here, if this is equal to this, then it's okay. If not, then give me null values. ठीक है. So here what we have seen, where there is a mistake like $@ all those stuffs, then we are getting a null value. ठीक है. But here if you look closely, we can see one of the mail ID
Here we are still getting the data here. I don't know why. I think we have to do the correction part. At the rate this. Let me do the correction part here. Let me see. There is a issue in this. Let me see why there is a issue here. Let me see why there is a issue here. Let me check that out. Let me clear it out. Multiple at the rate symbol are there. We have to fix this thing first. Multiple at the rate and these things are matching, right? So at the rate. Okay. We can do one thing. Let's see. We can do one thing. We should use the like wala phrase. ठीक है? Let's do one thing. ठीक है? Let's see. What should we do? Case when is there. Let's say when. Again, let us say when. Then we say when this. Control C, when this, like anything if it is ahead of this and this, then null end. ठीक है? Let's do this. Let's do and check it out. Okay. Okay, right now it's okay. ठीक है? Still we are having this thing at the rate. Anything can be there. Okay, still it is showing the error here. Like at the rate, I told anything can be there before at the rate. Anything can be there after at the rate. At this. No, still it is showing an issue. Let me see how to clear it out. Let me check why it is showing like this.
Okay, let's write end. Then again let us write case when this end. Let's write this. And let's see. Okay. Let us write like this. Hash at the rate this. Then null end. No, it's still there is an issue. Let's clear it out. Let's see what can be the solution. Like this, then let's see what can be here. Let's check this out. Why it is showing like this? Let's see what's the issue here. It's this. Like percentage at the rate percentage, then at the rate percentage, then I will write not okay. Let's see. Okay. So here we have got the data. Take not okay kind of thing. Correct. Then not okay. I will write else we will write this.
end. Let's see. Okay, chalo, we have got it. We have got it. ठीक है. In this way we can find out the solution, right? So this two data are showing not okay right now, and we can work on this. ठीक है. So we have got it. Let's remove this and let's check once. From this chalo ठीक है. So in this what things we have got? We have received all the things apart from this too. Right. So you have got the output indirectly. ठीक है. Not I want here, to be honest. And, then this. Suppose I remove this thing. Let's clear it out properly. Okay. Okay, we have to use CT here. If we want, we can use CT and go with it, but anyhow we have got the data related to not okay and null. ठीक. We can use CT here. Let's do this with T1 alias this. Select everything from T1 where T1 dot b trim not okay. यहाँ पे this और T1 dot case is not null. Let's see what output do we get. We are getting like this. Let's remove this not okay. Let's go with this. ठीक है. We have got this first thing first. So here we can say these are the data. Here we can say these are the data which is kind of correct, like correct mail. Here mail is correct, mail is correct. Where there is null, we cannot say anything, because see that's the customer mail ID. Like we cannot do any modification here, or we cannot keep any placeholder here. ठीक है. So this is the way we can solve this question, right? So if you have any doubts in this, you can directly ask. You have to use CT here, to be honest. So that's an additional part of it, to use CT. Apart from that, any doubt you have related to this data cleaning part, you can ask me here in the live stream. So do you have any doubt related to this data cleaning topic? Please ask your doubts.
then we'll move to the next part of data cleaning. ठीक है, this is the email data cleaning. After that we will move to next part of data cleaning. ठीक है, so if you have any doubt in this, just ask your doubts related to this. I will clear it out here only. So if you have any doubt related to this, just ask your doubts. So if you have any doubts related to this, just ask your doubts, and I am ready to help you out in this data cleaning part, especially the data cleaning part. So if you have any doubts related to this, please ask your doubts related to the data cleaning part so that I can clear it out here only, and you also keep your doubts clear, right? Because data cleaning is the main, I mean to say, the main thing that a data analyst do kind of on a daily basis. Daily basis means if the data is getting updated on a daily basis, then that's the main part of it, to be honest, right? So okay, let's move to the next question then. Next question is phone number cleaning. ठीक है, next question is what? Phone number cleaning. ठीक, let's write it out. Let's write the next question, that is what? Phone number cleaning. ठीक है, this is the next question which we will be doing it right now. So let's see what data we have in the data set for the phone number part. Let's check this out. Customers executed. Okay, let's see what we have. Okay, so this is the phone number wala part. ठीक है, where is it? Yeah, this is the phone number wala part, right? In this what we have, in this we, let me just copy and paste it here in the whiteboard so that it will be easy for everyone to check it out. ठीक, if you check the phone number here and I ask you like what is the observation, like what's your observation in that, what can you say? Like what will be the answer from your side? Simple, you can say like there are spaces. First observation will be spaces here, here like this, here as well. Let me just use here, here, here. Okay, what's the second observation? Second observation, you will say there is plus somewhere, there is somewhere plus is not there, like this. What is the third observation? Somewhere there is a dash, but somewhere no dash is there. ठीक, fourth observation, like in front side, मतलब in the starting part, also in the ending part, like both the part are having spaces, right? This would be your observation, simple as it is, right? So do you get any other observation in this? If I ask you like what is
any other because this is what I can see from here related to observation, right? From my point of view, like if I ask you like any other observation that you can see from your side, which we should point it out here, which we should point it out, sorry, right? So do you find any other observation related to this? Okay, no worries for that. We can do one thing. Let's go to the SQL environment and let's work on this part first. Okay, if we get any other observation, we will continue to do with it. Like we can continue to cover it up as well, right? First thing first, what I should do, I should first say ki select phone raw, because I need only two columns to be honest, right? What two columns do we need? The first column is the phone raw, second column is the clean part of the phone raw. Okay, clean part is what? Trim lower phone raw. Okay, let's see what we get in this. We get like this kind of scenario. Okay, let's cover it up with removing all other spaces as well. For that, let's use regexp replace phone raw. In this we will say this, then this, then global. Let's check this out. If I do this, what I get to see all the spaces, like if it is in the front part, if it is in the end part of a data, it is all removed. Right now what I have to do, okay, from this thing, if I ask you what is the observation, because see, main thing is in SQL you have to just explore the data. Okay, data exploration is must. Okay, that's what I'm saying. Right now if I ask you, you would say कि right now only two things I can see, this plus part, second this dash wala part. ठीक है, these are the two things. And if I ask you what we are not seeing here, that like what, like if we compare, like this is the thing on the first observation and what things we should not include from the first observation, you would say all the spaces are removed, right? All the spaces are removed from the phone numbers. ठीक है, this is the thing that we cannot include from the first observation. ठीक है, because we have removed it with the help of what? Trim and regexp replace. ठीक है, that's the thing. Right now from here we have to go with the next step of this cleaning part, that is removal of plus and removal of this minus. ठीक है, we have to go with this. ठीक, let's see what we can do here. What if I say कि replace whatever things are there, replace the plus part, sorry, replace the plus part with a string like this, empty string. What if I say like this? Let's see what do we get.
Oh, sorry. Hmm. What I get here, I get to see whatever plus is there, that is replaced by a empty string. ठीक है, whatever plus is there replaced by a empty string. Right now what I will do, I also want to remove the dash part. ठीक, dash part. ठीक है, let's, we can do one thing, we can add one more replace here, but it will be a big thing. Let us see. What should we do? Should we add replace? Should we add one more replace and remove? Let me show you this thing. Like, should we add one more replace and remove the minus part as well? What should we do? Like, any suggestion you can write in the live chat. I am waiting. Right, should we add one more replace and remove the minus part, or should we just go on with the plus part, then keep a ct, then remove the minus part? What should we do? Like, what is your observation in that? Because in this we are not using any like intermediate or advanced level of what we say regex. We are just using regex replace, which is like basics of the basic part, right? That's what I'm saying. Like, what is your observation in that? What's your observation, or what's your thought process in that? What should we do? Should we go with the replace part, or should we go with the regex part? There is a regex solution which we can use, but that is on an intermediate level, and there is a easy solution that is related to replace. So what should we do? Should we add one more replace and then say कि if dash is there, keep it as an empty string? Should we do like this? Let's execute it. We can do like this as well, we can do like this, or there is one more solution. Let's go with this. There is one more solution. ठीक है, one more solution. What we can do, rather than using two replace, where is it, rather than using two replace, let's just use one replace and go with the regex part. I mean advanced regex part, I mean to say. ठीक, I will just say कि regex p replace, sorry, regex p replace trim this. ठीक है, trim this and only keep the digits. I will say to SQL कि भाई only keep the digits 0 to 9. ठीक है, only keep the digits. ठीक, and apart from them anything is there, just keep an empty string. ठीक, what if I do this here? Let's see, we get the same answer, right? We get the same answer. We can use two replace, or we can use one regex, or we can use one more regex replace and go with the flow, right? Right now in this scenario we have only plus and minus. ठीक है, that's why we can use two replace and go with the flow. Suppose there is like plus minus at the rate, at that time we have to use this regex p replace and go with the flow. ठीक है, that's the thing. So any doubt in this? Hi Vishal, welcome to live stream. Welcome to live stream. प्रेजेंट सर, जय माता दी, जय माता दी भाई. आर यू हियर? हाँ, आई एम इधर ही हूँ भाई. यस, आई एम हियर ओनली. जस्ट सॉ योर मैसेज बिकॉज जस्ट आई हैव रिसीव्ड द मैसेज.
इट इज़ लाइक 9:42. हाँ, 9:42 में ही आपका मैसेज आया, टू बी ऑनेस्ट. और क्या है. ओके, सो हाउ आर यू विशाल? लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. कैसे हो? एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन रिलेटेड टू द डेटा साइंस? आप डेटा साइंस का लाइक प्रोजेक्ट देखे क्या? जो, लेट मी गिव यू द लिंक. ये जो प्रोजेक्ट का लिंक है, हैव यू चेक दैट? जो प्रोजेक्ट अभी 1 तारीख को ही पब्लिक हुआ है, ये वाला. ओके, वी हैव 2 क्वेरीज. और कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं बढ़िया हूँ भाई. आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया. चलो सही है, दैट्स अ गुड थिंग. और ये प्रोजेक्ट देखा आपने, जो प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, जो March 1 को पब्लिक होने वाला था, वो एक बार चेक करो कैसा है. लाइक 3 आवर्स का है. देखना, आराम से देखना. कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछना, ठीक है? कुछ भी डाउट होगा इसमें पूछ सकते हो, राइट? अगर आता है तो सॉल्व कर दूंगा. अगर आउट ऑफ द नॉलेज है तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के आई विल हेल्प यू आउट. क्योंकि डेटा साइंस रिलेटेड मेरा उतना क्लियर नॉलेज नहीं है. लेकिन अगर वो नॉलेज के अंदर है, जो भी डाउट आप पूछते हो, तो आई कैन हेल्प यू आउट. अगर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस है और मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है, आई विल आस्क यू, ठीक है? कौन सा प्रोजेक्ट? यही तो, ये जो ऊपर मैं आपको दिया हूँ लिंक, डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट. आई होप यू कैन चेक द लिंक. डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट जो है, दैट वन. लेट मी वेट. एक काम करता हूँ, मैं आपको मेल करता हूँ मेरा, आप आई मीन टू से आपका मेल आईडी है अभी अपने पास, उस पर मैं आपको भेज देता हूँ. डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट आपको मेल कर दिया हूँ विशाल, चेक वंस. आप जो मेल किए थे उसी मेल आईडी में किया हूँ, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है? इनकेस अगर इसमें शो नहीं कर रहा है, मतलब मेरे को तो शो कर रहा है लाइव चैट में, इनकेस इट इज़ नॉट शोइंग, क्योंकि आप लोग के साइड से मेरे को लिंक शो नहीं करता, इसलिए बोल रहा हूँ. तो मैंने आपको मेल कर दिया है, एक बार आप जाके चेक करो, राइट? गो एंड चेक वंस. वही डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट जो आप पूछ रहे थे कि लाइक क्या क्या है इसमें, सिलेबस एंड ऑल, राइट? एक बार चेक योर मेल, ठीक? मैंने आपको मेल कर दिया. और कुछ भी डाउट होगा पूछना, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, आपका मेन डोमेन डेटा साइंस का है, इसलिए बोल रहा हूँ. कुछ डाउट होगा पूछना, आई कैन हेल्प यू आउट. इन केस अगर सिलेबस के बाहर है, मैं अपने फ्रेंड से पूछ के आई विल हेल्प यू आउट. ओके भैया, स्टॉक प्रेडिक्शन वाला, राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, दैट स्टॉक प्रेडिक्शन वन. स्टॉक प्रेडिक्शन, स्टॉक प्रेडिक्ट, सॉरी. फिर LSTM CNN, यही वाला, राइट? दैट्स द थिंग. तो आप एक बार चेक कर लो, स्टॉक प्रेडिक्शन वाला, राइट? उसमें अभी के लिए हमने LSTM और CNN यूज़ किया है. ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी भैया. ANN कर लिया, CNN भी हो गया है, RNN में दिक्कत आ रहा है. ANN का मेरे को आइडिया नहीं है, CNN का हमने यूज़ किया हुआ है. RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, राइट? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जितना मैंने सुना है, ये आपका मतलब शायद सीक्वेंशियल डेटा से कुछ रिलेटेड है, टू बी ऑनेस्ट. CNN तो वी हैव यूज्ड इट, राइट? RNN is recurrent neural network. I think I am correct, right? Uh, check once. ANN का मेरे को आइडिया नहीं है क्या है. CNN मैंने तो दिया है, ANN का आइडिया नहीं है. और RNN का जितना मेरे को आइडिया है, इट इज़ लाइक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आई थिंक सो, ठीक?
अच्छा, वी हैव 2-3 क्वेरीज. अब चीज़ें भर जा रही है. वेट. ओके, लेट मी चेक. यू आई भी ऐड करना है. यू आई मतलब इज़ इट यूज़र इंटरफेस, राइट? इज़ इट यूज़र इंटरफेस क्या? मतलब वही वाला यू आई ना जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अपना जो एंड्रॉयड का यू आई अच्छा है, आई ओ एस का यू आई अच्छा है, दैट इज़ इट रिलेटेड टू दैट यूज़र इंटरफेस? ये हाय यश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी. सी एन एन तो इमेज में यूज़ होता है. सी एन एन हमने इसमें भी यूज़ किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में. ठीक है, सी एन एन का मैं इतना बता रहा हूँ, जो डेटा हम लोग जो इनपुट करते हैं ना, डेटा मतलब इन अ इंडिपेंडेंट वे, वो सारे मेमोरीज़ के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो डेटा प्रेडिक्ट करता है. मतलब डेटा प्रेडिक्ट करता है, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक वाला डेटा हम दे रहे हैं ना, दैट इज़ लाइक इंडिपेंडेंट डेटा एंड इंडिपेंडेंट टू पर्टिकुलर डेट. ठीक है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे, उसमें इंडिपेंडेंट टू पर्टिकुलर डेट. आज स्टॉक डाउन हुआ तो उसका डेटा, स्टॉक अप हुआ तो उसका डेटा, इट इज़ लाइक दैट. ठीक है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट डेटा. तो सी एन एन का तो वही यूज़ है. ठीक है, इमेज में भी यूज़ होता होगा मे बी, लाइक उसमें आइडिया है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी. एल एस टी एम कौन सा है? इसी में ही है जो मैंने प्रोजेक्ट का लिंक आपको दिया. एल एस टी एम और सी एन एन एक्चुअली दो रिक्वायरमेंट में हमने काम किया हुआ है, जो अभी मैंने प्रोजेक्ट का लिंक आपको मेल में दिया है. दैट इज़ द थिंग, राइट? एल एस टी एम और सी एन एन दोनों हमने यूज़ किया हुआ है. चेक दैट आउट. यूज़र इंटरफेस, यस. ओके, हाय. ओके यश, हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूँ भाई. यश, तुम कैसे हो? हाउ आर यू यश? कैसे हो तुम? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? Like, how is everything going on? So, any more questions? Let me check. एक बार देख लेता हूँ ये स्ट्रीम सही चल रहा है कि नहीं. Let me check once. Is everything okay? Let me see, do we have any queries? Okay, we have one more query from विशाल. एल एस टी एम होता क्या? एल एस टी एम इज, सॉरी, एक मिनट. हाँ, एल एस टी एम इज़ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, उसका फुल फॉर्म है. अब इसमें क्या होता है, मतलब आई मीन टू से स्टॉक वाले जो प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया उसमें क्या रहता है, उस पर वो जो टाइम सीरीज़ डेटा है वो प्रेडिक्ट करता है. आई मीन टू से अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे उसमें देखना, मेल, फर्स्ट मेल में ही आपको मालूम चल जाएगा कि हमने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा फेच किया हुआ है एपीआई से. एपीआई कौन सा यूज़ किया हुआ है हमने? वाई फिनेंस, आई मीन याहू फिनेंस का. ठीक है, तो उस डेटा को लेके हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं. ट्रेन करने के बाद हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि लाइक नेक्स्ट डे का डेटा क्या रहेगा, मतलब नेक्स्ट डे के लिए प्रेडिक्ट करो.
ठीक, दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. तो एक तरीके से अगर आप डीप डाइव करोगे, अगर आप देखोगे कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग द टाइम सीरीज डेटा. ठीक है, दैट इज़ LSTM, राइट. ठीक है, दैट्स द थिंग. ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम यश. पाइथन का कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म पाइथन रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स वी हैव समथिंग. दिस लीड कोड, डेटा लेमर, यही सब है, इसी में ही हो जाएगा आपका, लाइक रिलेटेड टू द प्रैक्टिस वाला पार्ट. यश, ये डेटा लेमर का है. ये हैकर रैंक का है. यू कैन गो विद दिस डेटा लेमर एंड दिस हैकर रैंक. इस पे अच्छे क्वेश्चंस हैं. लीड कोड में भी है अच्छा क्वेश्चन, बट लीड कोड में आई हैव नेवर ट्राइड एंड टेस्टेड टू बी ऑनेस्ट. हैकर रैंक वाला अच्छा है, मतलब इट्स लाइक गुड वन, गुड प्लेटफॉर्म. और डेटा लेमर में भी यू कैन प्रैक्टिस आउट ऑल दोज पाइथन एंड सीक्वल का क्वेश्चन, मतलब बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट. ओके, वी हैव 2-3 क्वेरीज फ्रॉम विशाल. चलो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट वीडियो देखता हूँ, लेट्स चेक दिस आउट. श्योर भाई, एंड कल फिर बात करते हैं. श्योर, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि अभी तो नहीं हो अरे आराम से देखो, अभी पूरा महीना बचा हुआ है. जस्ट टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से प्रोजेक्ट देखो, समझो प्रोजेक्ट को. कहीं कुछ भी डाउट हुआ जस्ट पूछना, ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया. सेकेंड पार्ट मैं अप्रैल 1 में करूँगा, 1 अप्रैल में. ठीक है, ऑन 1 अप्रैल. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह चाहिए है, मतलब एडिटिंग वगैरह थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक, तो इसलिए मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, 1 मंथ का एटलीस्ट टाइम दूँ हर पार्ट के लिए, ताकि मतलब लोग देखें, समझे प्रोजेक्ट को, डाउट वाउट क्लियर हो, देन हम लोग सेकेंड पार्ट में जाए. तो अभी 1 मंथ है अपने पास पूरा क्लियर. नो वरीज फॉर दैट. अभी 1 मंथ पूरा है, नो वरीज फॉर दैट. ठीक, सो दैट्स द थिंग. अभी 1 मंथ है, सो नो वरीज. आप आराम से देखो, समझो प्रोजेक्ट को, जहाँ पे भी डाउट है पूछो, एंड आई विल क्लियर इट आउट. राइट, लेट्स सी, डू वी हैव एनी मोर क्वेरीज राइट हियर. ओके, मुझे आवाज़ भी कम लग रहा है, आपका वॉइस लो, वॉइस, लेट मी चेक यार. साउंड, साउंड तो यहाँ से ठीक है, मतलब शायद इसीलिए वॉइस कम लग रहा है, शायद क्योंकि थोड़ा फीवर टाइप का है, मे बी शायद इसीलिए लग रहा होगा, मे बी व्हाट आई बिलीव. क्योंकि साउंड इधर से तो व्हाट आई कैन सी इट इज़ करेक्ट, मतलब इनपुट वॉइस ठीक है एंड ऑल दो स्टफ्स. ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी. आपकी वॉइस लो, मुझे आवाज़ कम लग रहा है. ओके, यश, क्लियर है वॉइस. ओके. ओके विशाल, प्रोजेक्ट में फुल वॉल्यूम है, तब भी प्रोजेक्ट में इश्यूज है क्या? लेट मी चेक वंस. टेस्ट, Parakeet AI is an एक मिनट, लेट मी चेक. ठीक है, दिस इज द थिंग, एंड व्हाट इट डज, इट जस्ट डिवाइड द डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग. सही है भाई वॉइस तो. ओके,
ओके फुल वॉल्यूम है तब भी इशू नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है क्या? लाइक अभी जस्ट मैंने यूज़ किया अपने मतलब लैपटॉप में ही फुल वॉल्यूम में। ओके ओके है, मतलब ओके है ये वाला। एक बार देखता हूँ, लेट मी सी। मतलब वॉल्यूम में तो ठीक लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब लैपटॉप में तो ठीक लग रहा है कि वॉल्यूम वगैरह ठीक किया हुआ था। वॉल्यूम मतलब वॉइस एनहेंस वगैरह ये सब किया हुआ था। ये अपना वंडर शेयर फिल्म हो रहा जो है उसमें इशू नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग ओके प्रोजेक्ट में भी वॉइस सही है। हाँ प्रोजेक्ट में टू बी ऑनेस्ट मतलब लैपटॉप में तो सही है भाई साउंड। लैपटॉप में भाई सही तो है साउंड टू बी ऑनेस्ट। फिर भी एक बार देखता हूँ, पूछता हूँ, और बाकी एक बार देखता हूँ किसी को अगर कुछ वॉइस में इशू है तो बताओ। लेट मी सी, दिस इज़ द लिंक। ठीक है, सो इन द लाइव स्ट्रीम अगर कोई चेक कर पाएगा तो प्लीज़ बताना टू बी ऑनेस्ट। कि मेरे साइड से तो इट इज़ ओके टू, मतलब देखा जाए तो सही है। बिकॉज द थिंग इज़ लैपटॉप में तो सही आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। ओके विशाल भाई आप ईयरफोन यूज़ करो, मतलब सही में कम है क्या वॉइस? बिकॉज ईयरफोन यूज़ करना पड़ रहा है। बिकॉज यहाँ तो करेक्ट है, मतलब वॉइस में कुछ लेट मी सी। मतलब ईयरफोन यूज़ करना पड़ रहा है। लाइक आई मीन टू से वॉइस क्या एक्चुअली कम है। इनपुट टेस्ट, मतलब मेरे को तो कीबोर्ड का भी आवाज़ सुनाई दे रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं कीबोर्ड का भी आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरे को यूट्यूब में जो प्रोजेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया, कीबोर्ड का तक आवाज़, सॉरी ट्रेन, इवन दो माउस पॉइंटर का तक आवाज़ आ रहा है। अच्छा सर मैं देखा आपका प्रोजेक्ट वीडियो वॉल्यूम अच्छा है। हाँ वही बोल रहा हूँ लाइक इसमें अगर मैं बोलूँ तो कीबोर्ड का मतलब कीबोर्ड का साउंड प्लस माउस पॉइंटर का भी साउंड सही है। बिकॉज द थिंग इज उस टाइम मैं माइक में ही आई वॉज शूटिंग द वीडियो, राइट। माइक सामने ही था और माइक इज़ ओके। हाँ बट और मैं चेक भी किया टू बी ऑनेस्ट टेस्ट इसमें स्प्लिट ट्रेन टेस्ट SPLIT, ठीक है। हाँ इट इज़ ओके टू बी ऑनेस्ट भाई। मतलब कीबोर्ड का तो आवाज़ सही आ रहा है प्लस माउस तक का भी आवाज़ आ रहा है इसमें। ओके वी हैव वन क्वेरी सर, DA में पाइथन ट्यूटोरियल्स देख के फिर प्रोजेक्ट बनाऊँ या डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ? देखो मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड गो विद द बेसिक्स वाला पार्ट, ठीक है। बेसिक्स वाला पार्ट मतलब फर्स्ट आपको ट्यूटोरियल्स में फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आफ्टर द बेसिक्स पार्ट देन आपको प्रोजेक्ट में जाना है। दिस इज सेकेंड प्रायोरिटी,
ठीक है, दैट्स द थिंग। ठीक, एटलीस्ट अगर आपको बेसिक्स का पता रहेगा, डेटा एनालिटिक्स में बोल रहा हूँ, बेसिक्स का पता रहेगा, इट्स गुड टू गो। ठीक, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से आपने, लेट मी गिव यू फ्री कोड। हाँ, मैं आपको एक वीडियोस वगैरह दे देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल्स का। ठीक है, ये फ्री कोड कैम्प का आप एक बार देख लो, पाइथन ट्यूटोरियल्स, दैट इज़ गुड टू गो। ठीक है, ये आप देख लो पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये देख लो, बेटर रहेगा, राइट। सेकंड कौन सा बेस्ट है अपना, वही कोड विथ हैरी। थर्ड डेटा विथ 12। ठीक है, ये सारे, लेकिन जो मैं लिंक दिया हूँ इट इज़ लाइक कि प्रॉपर पार्ट वाइज दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से प्रॉपरली डेटा एनालिटिक्स के लिए दिया हुआ है, और आपको सही समझने में भी सही लगेगा, राइट, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जस्ट गो विद दिस एंड लर्न द बेसिक्स, फिर आप जाके प्रोजेक्ट में जंप करना, राइट। ठीक है, ओके, वी हैव वन क्वेरी। हाँ सर, मैंने सीक्वल पावर बी आई डेटा विद 12 का ही किया। डेटा विद 12 इज़ अ गुड वन भाई, मतलब अच्छा ट्यूटोरियल्स देता हो, मतलब इवन दो जैसे आपने बताया ना यश कि डेटा विद 12 इज़ बेस्ट, आपकी तरफ बहुत लोगों ने भी अच्छा ही फीडबैक दिया है डेटा विद 12 में, इसलिए कोई भी मेरे को पूछता है रिलेटेड टू सीक्वल एंड पाइथन तो मैं डेटा विद 12, कोड विथ हैरी और फ्री कोड कैंप के सजेशंस ही देता हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी उनके फीडबैक सुने, मतलब लाइव फीडबैक, लाइव स्ट्रीम में जितने भी फीडबैक मैंने सुने, इट इज़ लाइक ऑलवेज ऑन द टॉप नॉच, मतलब बेस्ट ही सुना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं, इट इज़ लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला है सिनेरियो। तो दैट इज़ वाई कि कोई मेरे को पूछता है, आई वुड रिकमेंड द सेम थिंग टू देम, राइट। सो दैट्स द थिंग। एक बार आप फ्री कोड कैम्प का भी चेक कर सकते हो, उनका भी अच्छा मतलब फीडबैक है, और कमेंट सेक्शन भी मैंने देखा, इट इज़ लाइक लिंक्डइन में भी मैंने देखा, इट इज़ लाइक अच्छा है, राइट। अच्छा, और एक चीज़ है, आपको अगर चाहिए तो ये हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी पाइथन फॉर डीए, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में है फ्री कोड कैम्प का, तो ये आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द इंग्लिश पार्ट। So you just mentioned that you want to learn. वाह वाह, दिस इज़ फॉर द इंग्लिश पार्ट, एंड बाकी हिंदी वाला तो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्री कोड कैम्प का है, राइट, ये फ्री कोड कैम्प का है, ठीक है, यू कैन गो विद दिस। और लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारा जो पाइथन वाला कोर्स है वो भी कंप्लीट होने वाला है, मे बी इन जस्ट 1 मंथ अराउंड, 1 महीना और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम लोग भी अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करेंगे फॉर डेटा एनालिटिक्स, राइट, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना वाला क्या है, जो डेटा एनालिटिक्स वाला कोर्स रहेगा, दैट इज़ 1 टॉपिक अ डे, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे हम लोग अभी सीक्वल का जो हम लोग कर रहे हैं रिलेटेड टू द कोर्स, सीक्वल वाला जो कोर्स है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में
इंग्लिश में अलग अलग दिन, 1 टॉपिक अ डे के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक वाइज है। तो हम लोग सीक्वल वाला भी कंप्लीट करने वाले हैं मे बी, और लाइक कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मेन टॉपिक्स जैसे प्रोसीजर, फंक्शंस इन प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें, मतलब एसिड, ACID, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं, मतलब एडवांस लेवल जो है वो कवर अप हो रहा है सीक्वल में, उसके वीडियोस अभी अपलोड हो रहे हैं। वो करने के बाद हम लोग पाइथन में चलेंगे फॉर डेटा एनालिटिक्स, राइट, और वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, है कि नहीं? दैट्स द थिंग। बट वो 1 टॉपिक अ डे रहेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग, जिसमें कि मतलब प्रॉपर वे में पढ़ाया गया है, जैसे ये फ्री कोड कैंप, डेटा विद 12, कोड विद हैरी, उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाया है इन अ सिंगल वीडियो। तो मैं बोलूँगा नॉट टू वेट टिल वी अपलोड, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, जब हम लोग टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे तो आप लोग टॉपिक वाइज अच्छे से देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। बाकी डाउट वगैरह के लिए हम लोग तो हैं ही लाइव स्ट्रीम में, कोई इशू नहीं है, ठीक। बाकी प्रोजेक्ट्स तो अभी है डेटा साइंस का, एंड दैट इज़ रियली मतलब एक्चुअली अ थिंग इज़ कि मेरे को भी सीखना पड़ रहा है डेटा साइंस का टॉपिक्स। द थिंग इज़ कि आई एम ऑल्सो नॉट गुड एट दैट मच काइंड ऑफ डेटा साइंस वाला डोमेन, ठीक है, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 काइंड ऑफ थिंग, है कि नहीं? तो डेटा साइंस वाला प्रोजेक्ट देखना, कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ आस्क मी आउट फ्रॉम दैट। ओके, वी हैव 1 क्वेरी। ओके सर, चलो सही है भाई, चलो सही है, यस यश, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, एंड ओके, टाइम कितना है? इट्स 10 राइट नाउ। ओके, चलो इट्स 10 o'clock, लेट मी क्लोज द लाइव स्ट्रीम। आज सुबह भी हमने 5 घंटे का लाइव स्ट्रीम किया था, नॉर्मल वाला लाइव स्ट्रीम, नॉट विथ द ऑडियो वन, एंड राइट नाउ वी हैव डन विद द ऑडियो वन। सो अब 10 o'clock हो गया, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो, एडिशनल डाउट, ये मेरा मेल आईडी है, आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो इनकेस लाइव स्ट्रीम के बाद आपको कुछ डाउट होता है, यू कैन जस्ट आस्क। ओके, वी हैव 1 more क्वेरी सर, और एक और क्वेश्चन, जॉब के अप्लाई। हाँ भाई बोलो, लाइक यू कैन आस्क द डाउट्स हियर। जॉब अप्लाई के लिए लाइक इन व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो, लाइक स्टार्टर, आई मीन से स्टार्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, इन दिस वे। अगर आप पूछ रहे हो फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, या तो स्टार्टिंग ऑफ द, आई मीन टू से डोमेन चेंज, या तो स्टार्टिंग अ न्यू टेक्निकल करियर, स्टार्टर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब स्टार्टिंग अ न्यू टेक्निकल करियर इन दिस वे। तो ओके, वी हैव 1 क्वेरी, फ्रेशर। सो द थिंग इज़, फ्रेशर के लिए एज आई ऑलवेज से, गो फॉर स्टार्टअप कंपनीज एंड ऑलवेज हैव अ चेक ऑन माई यूट्यूब पोस्ट, बिकॉज द थिंग इज़, मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी और कोलिग्स को ऑलरेडी बोला हुआ है कि उनके कंपनीज़ में या तो उनके जान पहचान में कुछ अगर दिखता है लिंक्डइन में रिलेटेड टू द फ्रेशर वैकेंसी, तो बताने के लिए, और जो एक्चुअली लीगल वाला रहेगा, लीगल इन द सेंस जिसमें कि HR का नेम, डोमेन नेम इस टाइप का रहेगा, तो मैं अपने यूट्यूब पोस्ट में उस टाइप के जॉब पोस्ट भी, आई मीन टू से शोकेस कर, आई मीन पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब पोस्ट वाले सेक्शन में, तो उसमें भी आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करना। जैसे कि मैंने बहुत सुना था कि लाइक डेटा साइंस में फ्रेशर्स का कम रहता है, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक टिल डेट आई थिंक 2 या 3 फ्रेशर्स का डेटा साइंस का वैकेंसी का पोस्ट किया है। सो यू कैन सी वॉट एवर जॉब पोस्ट आई गेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई कोलीग्स, वो मैं यूट्यूब पोस्ट में डायरेक्टली जस्ट गिव यू द मेल आईडी एंड ऑल दो स्टफ्स, आप लोग डायरेक्टली अप्लाई करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से फ्रेशर्स के लिए बेस्ट थिंग इज स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज एंड मेट्रो सिटीज़, दे
आर हैप्पी टू हायर फ्रेशर्स, और उस टाइप के फ्रेशर्स जो हार्ड वर्किंग हो, जो सीखने में इंटरेस्ट रखते हो उन लोग को, ठीक है, दैट्स द थिंग। सो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखो कि स्टार्टअप कंपनीज, एंड ऑल्सो साइड बाय साइड आप एमएनसीज में भी अगर मिलता है गो विद दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे जॉब पोस्ट में तो एक बार केपीएमजी का डेटा एनालिटिक्स का था 0 to 2 years का, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। तो एमएनसीज भी कभी कभार जॉब पोस्ट या जॉब वैकेंसी निकालते हैं लिंक्डइन में या तो अपने जॉब पोर्टल्स में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरा जो यूट्यूब पोस्ट है, जस्ट हैव अ चेक ऑन दैट। कभी भी कुछ भी मैं जस्ट आई पेस्ट सम डेटा और सम पोस्ट रिलेटेड टू द जॉब वैकेंसी, डायरेक्टली अप्लाई करना, राइट, दैट्स द थिंग। तो anybody have any other doubt in the live stream? So anybody have any other doubt in the live stream? Okay, we have one query. Okay, and thank you sir for guidance. अरे थैंक यू क्या यार, थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो, थैंक्स टू यू ऑल फॉर दैट। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर टू गाइड यू, मतलब जितना हो पाएगा आई विल गाइड यू ऑल, जितना हो पाएगा आई कैन हेल्प यू फ्रॉम माई साइड। एंड थैंक्स टू यू ऑल कि यू ऑल आर जॉइनिंग माई लाइव स्ट्रीम, थैंक्स टू यू ऑल फॉर दैट। सो okay, it's 10:15 or okay 10:14 right now, so it's time to say goodbye and good night, and let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye, take care, happy coding, happy learning, and happy querying, and thank you everyone for joining. So good night, and let's meet again in new लाइव स्ट्रीम, ठीक है, एंड ओके या बाय एंड गुड नाइट। यश, सो बाय एंड गुड नाइट यश, ठीक है, चलो बाय बाय, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, चलो बाय बाय।